Assalamu alaikum dear students, I am Anjum Shafiq, your biology teacher for MDCAT, and today I am going to discuss the superclass Tetrapoda and its classes. So let's move on. Now dear students, the superclass Tetrapoda. So superclass Tetrapoda, they are four-footed एनिमल्स एक्चुअली, और उसमें पहली जो क्लास है, तो सुपर क्लास मैं पहले भी बता चुका हूँ, फाइलम से कम और क्लास से ज़्यादा कुछ जो करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनकी इन बिटवीन है सुपर क्लास. सो इसकी सब डिवीजन है, जो से नीचे वाली कैटेगरी है वो है क्लास. सो इसमें चार हमने सुपर क्लास टेट्रापोडा में चार क्लासेस है. द फर्स्ट वन इज क्लास एम्फीबिया, जिसमें एम्फीबियंस है. एम्फीबिया का मतलब यही होता है डियर स्टूडेंट्स, लिविंग इन द ऑर्गेनिजम्स which live or living in both environments. आपको पता अर्थ में दो ही तो मेजर इन्वायरमेंट्स हैं, एक है लैंड और दूसरा वाटर. तो जो दोनों जगहों पे रहने के आदी हों उनको कहा जाता है एम्फीबियंस. और डियर स्टूडेंट्स, इसके पीछे कुछ थोड़ा सा वो हिस्टोरिकल अपना एवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं कि ड्यूरिंग डिवोनियन जो पीरियड है, फॉसिल्स, डिवोनियन पीरियड फॉसिल्स, दे प्रोवाइड एविडेंस. क्या एविडेंस प्रोवाइड करते हैं कि देयर वर अ ग्रुप ऑफ फिशेस, देयर वर ग्रुप लोब फिन, जिनको डिप्नॉय कहा जाता है. एमसीक्यू के लिए मार्क कर लीजिए, डिप्नॉय लोब फिन फिशेस which live in shallow waters. shallow water में, and they used to crawl. They crawled from one pool to the other and developed certain characters. उनकी बॉडी से स्केल ख़त्म हो गई. जो उन मछलियों के जो फिन्स हैं वो लिम्स में चेंज हो गए, अपेंडेजेस में चेंज हो गए, ठीक है, लिम्स में. और इसी तरह से उनकी जो ड्यूरिंग लार्वल स्टेजेस उनमें रेस्पिरेशन हो रही है गिल्स के ज़रिए, और फिर ड्यूरिंग एडल्ट स्टेजेस मेटामॉर्फोसिस के ज़रिए इट इज चेंज इनटू द लंग्स. तो इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में पहली चीज़ देखेंगे, देयर skeleton is usually bony skeleton है, ठीक है, and tailed, have tail or tailless. Some of them they are tailless, like the adult frog that is tailless. Clear? टेल्ड में जैसे एम्फीबियंस में सैलमेंडर्स हैं, न्यूट्स हैं. एंड सम ऑफ देम दे हैव 4 feet, मीन्स दे आर टेट्रापोड्स, लाइक जिसकी वजह से उनको टेट्रापोड्स कहा जाता है, और 4 limbs. एंड सम आर लेगलेस, उनकी टांगें नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती हैं. फॉर एग्जाम्पल सिसिलियंस, ये भी एमसीक्यूज़ के लिए मार्क कर लें, लेगलेस एम्फीबियंस. इसी तरह से देयर रेस्पिरेशन इज वाया गिल्स इन लार्वल स्टेजेस, एंड लंग्स इन एडल्ट्स, जैसे कि फ्रॉग्स. एंड देयर हार्ट
is 3-chambered two atria plus one ventricle in which there is complete mixing of the blood, clear? And there are three systemic branches, three pairs of systemic branches. Evolution of heart में अपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, इनमें मौजूद है. And their sexes separate and they are poikilothermic, मतलब कि they are cold-blooded. They are cold-blooded and they used to hibernate as well. Hibernate during cold. Fertilization. External. Clear? इनकी fertilization external है और development का process भी externally होता है इनका. Amniotes. मतलब कि इनके अंदर जो एम्ब्रियोनिक लाइफ में जो प्रोटेक्टिव लेयर्स बनती हैं, एमनियन, कोरियन, एलेंटॉइस, जिसके अंदर एम्ब्रियो होता है, वो इनके अंदर नहीं बनती हैं. सो दे आर एन एमनियोट्स. क्लियर? एंड लेट्स हैव सम एग्जांपल्स. टोड्स, फ्रॉग्स, सैलमेंडर्स, एक्सेट्रा. चलें, अब आते हैं ज़रा नेक्स्ट क्लास पे. नाउ द क्लास reptilia. So they used to live solely on land. ये सिर्फ खुशकी पे रहते हैं आमतौर पे, ठीक है, usually most of them. And they have copulatory organ इनके अंदर डेवलप हो चुका है, that is penis for internal fertilization. And their skin is scaly. अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इनकी स्किन के हवाले से भी कुछ पॉइंट्स नोट कर लीजिए. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ. Their skin is smooth and in some it is have glands which are poisonous, ठीक है, and their skin has chromatophores, colored pigments हैं, ठीक है, chromatophores स्किन में मौजूद हैं. ये भी चीज़ पॉइंट हो रही है. यहाँ पे इनकी स्किन जो है वो स्केली है, ठीक है, थोड़ी स्केली और हार्ड है, which is used to live on the land. And their eggs are leathery, ताकि हार्श इन्वायरमेंट में वो टूट ना सकें आसानी से. ड्राई कंडीशंस में वो प्रोटेक्शन ऑफर करते हैं. एंड हैव दे आर yolky. The yolk is large. And they have 4-chambered heart, 2 atria, and 2 incompletely partitioned ventricles are there, except, ये एक्सेप्शन याद रखनी है, क्रोकोडाइल्स. क्रोकोडाइल्स के अलावा बाकी सब के अंदर जो वेंट्रिकल्स हैं वो completely partitioned है. And they have got their sexes are separate
and they are also poikilothermic. Means they are also cold-blooded. They are unable to maintain their body temperature. They flourished through Mesozoic era. उसी को उसके लिए मार्क करें. They flourished through Mesozoic era. And they are the offshoots of 4 out of dozen evolutionary lines. जो एवोल्यूशनरी लाइन इनके एंसेस्टर्स के आ रहे हैं 12 में से 4 की ऑफशूट्स हैं. एंड द प्रेजेंट डे reptiles are lizards and snakes firstly, and sphenodon of New Zealand that is called tuatra, जिसको हम कहते हैं the chameleon. They are the reptiles. Secondly, and thirdly are the crocodiles. Clear? And they are thought to be present between Jurassic and Cretaceous periods. ये इन periods के दरम्यान ये flourish हुए. So that is about them. और इसमें fertilization याद रखिएगा. Fertilization क्योंकि copulatory organ develop हो चुका है, internal है, but development is external. Development is external. They are amniotes, as they have got amnion and chorion and allantois. So these are the embryonic membranes. In which the fetus is being protected, और जो उनका embryo होता है उसमें protect हो जाता है. Now dear students, the class aves or the birds. Important चीज़ याद रखनी है. It is universally accepted by the evolutionists, not me, by the evolutionists, that because I am a creationist, or I believe in the theory of special creation. So the evolutionists believe that the birds and mammals evolved from reptiles. मतलब कि reptiles इनके ancestors हैं. And the earliest non-fossil bird is of Archaeopteryx, the earliest non-fossil bird is that of Archaeopteryx, जो कि जुरासिक टाइम्स में डायनासोर्स के टाइम्स पे रहा करता था. It was about the size of present day crow, have bony teeth
जो कि मॉडर्न डे बर्ड्स के अंदर नहीं होते, ठीक है, उनकी चोंच में दांत नहीं होते, इसमें थे, ठीक है, एंड लॉन्ग टेल एंड 2 wings with 3 claws in each wing. हर विंग में 3 claws थे, ठीक है. So that is known as some history related to them. And now let's discuss some of the features of the birds. तो पहले चीज़, the body have 4 regions, 4 regions हैं birds के. That is head, neck, trunk, and tail. Clear? And they have large eye sockets in them. They have epidermal exoskeleton in the form of feathers. They have scales on legs, and their upper limbs modified for flight or for flying, and lower limbs they are modified for पर्चिंग. पर्चिंग का मतलब बैठने के लिए दरख्तों के ऊपर या किसी जगह के ऊपर, और रनिंग या फिर भागने के लिए, जैसे कि रनिंग बर्ड्स के अंदर ऑस्ट्रिच वगैरह के, ठीक है. एंड देयर बोन्स हैव एयर स्पेसेस टू मेक लाइट वेट skeleton. Here, and their lungs have extensions called air sacs. कितने होते हैं? 9. Usually the birds have 9 air sacs, जिनके lungs की extensions हैं, और इनमें lungs में पैराबरोंकाई होते हैं. डिटेल से डिस्कस हो चुका है चैप्टर नंबर 13, द गैसियस एक्सचेंज. और दे हैव 4 चैम्बर्ड हार्ट, 4 चैम्बर्ड हार्ट, 2 atria plus 2 ventricles, which are completely partitioned, and they have got a right aortic arch. Left is absent. याद रखिएगा, लेफ्ट किस में है? वो मैमल्स में है, उनमें राइट नहीं है, ठीक है. एंड दे हैव लार्ज yolky eggs, and their beaks are without teeth, उनमें दांत नहीं होते. तो दांत नहीं होते फिर क्रश कैसे करेंगे? दे हैव गिजर्ड, जिसको हम कहते हैं ना पोटा कलेजी, आपने नाम सुनोगा, जो पोटा जिसमें पोटा होता है इसका, वो बेसिकली ये गिजर्ड है. दे हैव गिजर्ड फॉर क्रशिंग फूड, क्योंकि इनके जॉस में टीथ नहीं होते. एंड देयर ऑर्गन of voice is syrinx, which is located at
bifurcation of trachea. Clear? And now their excretory system, lacks urinary bladder. उन्हें urinary bladder नहीं होता. So their urine is semi-solid. It is mixed with the feces. And they are homeotherms, means they are warm-blooded, they maintain their body temperature, and fertilization is internal, but development is external. Clear? And they are oviparous. They are oviparous. And some birds have lost their power to fly, called running birds. उनको रनिंग बर्ड्स कहते हैं. रनिंग बर्ड्स की एग्जांपल है कीवी, ऑस्ट्रिच, etc. So these are the running birds, as well as other examples include the mallard and the kingfisher and the robin and sparrow and the parrots, etc. So all these are the birds. And in the last, the class Mammalia. The mammals. So dear students, the term mammal was given by Linnaeus. Clear? For those animals which are nourished by breast milk of their mothers. Clear? Breast milk means the mammary glands. So mammary glands say mammals. तो ऐसे जानवर जिनकी परवरिश उनकी माएँ अपने छाती के दूध से करें उनको कहते हैं मैमल्स. तो पहली दफ़ा टर्म किसने दी थी? लिनियस ने. इसको भी हम सीक्यूज़ के लिए मार्क करेंगे, लिनियस ने. ठीक है. और इनके जो रेप्टाइलियन एंसेस्टर्स हैं, रेप्टाइलियन एंसेस्टर्स ऑफ मैमल्स आर कोटाइलोसॉर्स. ठीक है, ये भी हम सीक्वेंस के लिए मार्क करें. और दे आर थॉट, इनके जो एंसेस्टर्स हैं, ancestors of mammals according to evolutionary concept lived with reptiles in Jurassic period.
and were called mammal like reptiles. और उसमें से एक एग्जाम्पल है वार्नोप. साइज ऑफ अ माइस, चूहे के साइज का था. ठीक है, ये वार्नोप मैमल लाइक रेप्टाइल्स में. ठीक है, साइज ऑफ अ माइस एंड lived on the trees. And remember one thing more, that mammals flourished through Cenozoic era. Clear? और याद रखिएगा हम किस एरा में रह रहे हैं, ये भी Cenozoic era ही चल रहा है. चलें, अब आते हैं सर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स पे. So number 1, their body is covered with hairs, no scales. Scales नहीं अब. Number 1. Number 2, they have developed diaphragm. हमने इतने एनिमल्स पढ़ लिए हैं, किसी में आपने डायफ्राम का नाम नहीं सुना. ठीक है, डायफ्राम का नाम नहीं सुना. सो डायफ्राम सिर्फ यहाँ पर ये इनकी प्रॉपर्टी है मैमल्स की. डायफ्राम, दैट इज अ रेस्पिरेटरी मसल प्लस इट सेपरेट्स chest cavity from abdominal cavity. Clear? And they have middle ear ossicles. इनके मिडल एयर में 3 हड्डियां होती हैं, उनको कहते हैं मिडल एयर ऑसिकल्स. दैट इज मैलियस, इंकस एंड स्टेप्स. और स्टेप्स बीइंग द स्मॉलेस्ट ह्यूमन बोन, याद रखिएगा. ठीक है, एंड दे हैव 1 लोअर जॉ, एक ही लोअर जॉ है. That is called mandible. And their organ of voice is larynx. That is situated at top of trachea, and they have 4-chambered heart, 2 atria and 2 ventricles completely partitioned, and have left aortic arch, no right one. Right one is present in only the birds, and they are usually viviparous. Some are oviparous. Clear? And they have got external pinna. Okay? The external pinna, ये सिर्फ mammals में होता है. Most of them they possess this. And they have the fertilization is internal, as well as development is also internal. And they are amniotes
Here we have got the protective membranes, the amniotic sac made up of amnion and chorion. And we are homeotherms. Means we are warm-blooded. Our bodies maintain our body temperature. Warm-blooded. Clear? Now, let us have the subclasses of mammals. It is divided into 3 subclasses. The subclass Prototheria. The Prototherians, they are the most primitive and link between reptiles and mammals. उनके दरमियान सबसे पुराना लिंक है. कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स रेप्टाइल्स वाले, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स चाहे वो मैमल्स वाले हैं, और दे आर कॉल्ड एग लेइंग मैमल्स. वाहिद यही क्लास है, सब क्लास है जो कि एग देते हैं. एग लेइंग मैमल्स. लेकिन ऐसा नहीं है कि जो फर्टिलाइजेशन इंटरनल है तो जो डेवलपमेंट एक्सटर्नल है, लाइक इन द बर्ड्स, इस तरह नहीं है. तो माँ के पेट में ही अंडा बनेगा, उसी के अंदर बच्चा है, और जब तक तो बच्चे की डेवलपमेंट मुकम्मल हो जाएगी तो फिर वो अंडा देगी. ठीक है. इनको ओवी वीवी पैरस भी कहते हैं. आपको याद होगा. ठीक है. ओवी वीवी पैरस, रिप्रोडक्शन चैप्टर नंबर 18. और फॉर एग्जाम्पल इसमें 2 एग्जाम्पल्स हैं. एक तो डक बिल प्लैटिपस, and number 2 is a spiny ant eater. Clear? So they are found in the Australia. The second subclass is Metatheria. अच्छा, इनको एग लेइंग मैमल्स कहते हैं. ठीक है. एग लेइंग मैमल्स, ये एमसीक्यूज के लिए. और इनको कहते हैं द पाउच्ड मैमल्स. पाउच्ड mammals are they? They have got a characteristic pouch. Their pouch is called marsupium, जिसकी वजह से इनको कहा जाता है marsupials. क्लियर. और पाउच के अंदर वाले साइड पे इनसाइड आर निपल्स for feeding. Clear? And these are the primitive mammals. सबसे शुरू के mammals असल में यही हैं. The most primitive mammals are there. वो link है between reptiles and mammals, और ये most primitive pure mammals. And इसके examples याद रखेंगे. एक तो kangaroo and opossum and Tasmanian wolf. Clear? Of Australia, the kangaroo, like it's present in Australia and America. And the third and the last subclass is eutherians, which are called placental mammals. इनके अंदर क्या बनता है? There is a formation of placenta. That is a connection between the fetus and mother. The placenta is also endocrine
tissue, it secretes progesterone, which is known as the hormone of pregnancy, as well as human placental lactogen, which acts on the mammary glands of the mother to start the milk production. इसमें कुछ जो हैं they have got spines. Spined mammal कौन से हैं? ये exception है. That is porcupine, जिसको सेह बोला जाता है. और कुछ जो हैं they have got scales on them. Scaled mammals आमतौर पर scales mammals में नहीं होते, ये exception है. That is pangolin. That is pangolin. और बाकी इसमें जो नॉर्मल एग्जाम्पल्स हैं, इसमें बैट्स एंड व्हेल, डॉल्फिन, seal, human, and goats, and horse, and elephants, and tigers, and leopards, and deers, and wolves, etc., etc. So these are the mammals. जी तो डियर स्टूडेंट्स, होपफुली आज का लेक्चर भी आपको क्लैरिफाई हो गया होगा. Hopefully there is no question, and if there is question, so you can put your question in the comments box and our subject specialist will answer you soon. And for more MCQs, you can consult our app. So अगले लेक्चर तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.